Hello, everyone. I hope I am audible and visible. I think everything seems to be fine. There's nothing that is wrong. Hello, Rishpana. Good morning, beta. Okay, so I think everything seems to be fine. There is nothing जो कि problem है. चलो. So शुरू करते हैं, है ना? Without a delay. क्या कहानी है? किस चीज की कहानी है? So last Monday was full of jokes. Yes, if you'll go through social media, whether that is Instagram, Facebook, or Twitter, or any other place, all you will get is LPG in India, right? And the jokes that were made. हाँ, मतलब Modi ji was telling people to not to panic, but in an election rally, not in parliament. पार्लियामेंट में आंसर दिया किसने? हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, जिन्होंने अलग-अलग स्टेटमेंट जो है अलग-अलग जगह पे पास किए थे, है ना? सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सो एलपीजी क्राइसिस जो है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसे बता रहे हैं क्या? इट्स अ पैनिक क्रिएटेड बाय पीपल. वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स एट ऑल. बट कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है विद द गुड मीडिया हाउसेस, वो सप्लाई जो पर्टिकुलर गड़बड़ हुई है उसके बारे में वो बात करते हुए दिख जाते हैं. यस, कि सप्लाई में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं. सो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाना ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली गोइंग ऑन. अगर हमें थोड़ा भी क्लैरिटी मिले, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर आंसर आए, प्रॉपर डेटा आए, फिर हम ये बात कर सकते हैं. बट एलपीजी क्राइसिस में सीम बी लाइक दैट. और जल्दी ही जो जिस तरीके का पानी क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके की डिस्कशन हो रहा है, हो सकता है जो लिक्विड फ्यूल है या जो पेट्रोल वगैरह है, उसमें भी ऐसा पैनिक या ऐसा क्राइसिस व्हाटएवर इट इज, वो देखने को मिल सकता है, राइट? तो ये कंटिन्यू है अभी भी. विल डिस्कस अबाउट इट. द सेकंड वन इज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, राइट? यस. भाई साहब, जो नए लीडर हैं आयतुल्ला अली खोमेनी, राइट, उन्होंने धमकाया है कि जब तक पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल $200 पर बैरल नहीं पहुंचता, we are going to open the Strait of Hormuz that will remain the close. Right. He also said that he will avenge his father's death. Right. And he also put three conditions to end the war. वो तीन कंडीशन, पहला तो ये है, रिकॉग्नाइजिंग द ईरान्स राइट. ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर जो दूसरी चीजें लगी हुई हैं, है ना, जिसके कारण उसका इकोनॉमिक राइट, उसका बेसिक राइट में कॉम्प्रोमाइज होता है, उसको रिकॉग्नाइज करो. जो रिपरेशन है उसको करो. गारंटी अगेंस्ट द फ्यूचर एग्रेशन करो. तो उन्होंने कंडीशंस भी रखी हैं बिफोर दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से द एंड ऑफ द वॉर. तो भाई साहब, ईरान कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक चोक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अमेरिका और इसराइल जैसी पावरफुल डिफेंस फोर्सेस को क्या कर पा रहा है? अपनी कंडीशन पे बेंड कर पा रहा है. तो ईरान को कहीं ना कहीं एक वो देखने को मिल रही है. फिर इंडिया की तरफ से जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पूरी चीजें बताई हैं ऐसा पार्लियामेंट में. एंड उन्होंने बोला कि दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस, नॉट जस्ट फॉर द इंडिया, राइट? तो उन्होंने सीधे तौर पे दो तीन चीजें बोली हैं: नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, पैनिक बाइंग कॉस्ट द लोकल शॉर्टेज, राइट? और एलपीजी जो गल्फ कंट्रीज है उनसे आता था, अभी वी आर डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेज. कई ऐसी चीजें उन्होंने बोली हैं. फिर आज के डिस्कशन में जो न्यूज में रहेगा, दैट इज डीपीडीपी. यस, डिजिटल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. इस पे वापस कल वो चल रही थी, डिबेट चल रही थी, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू एग्जामाइन कि जो वो है, क्या कहना चाहिए, पर्सनल डेटा है वो, व्हाट इज पर्सनल डेटा, मतलब द कॉन्स्टिट्यूट, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पर्सनल डेटा अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. सो दे आर गोइंग टू एग्जामाइन, दे आर गोइंग टू हैव सम स्टडी ऑन दिस. तो डीपीडीपी जो है वो आपके उसमें आएगा. फिर भाई साहब, अनदर बैड न्यूज. दिस इज समथिंग थोड़ा सा गड़बड़ वाला चीज है. यूएस जो है वो इन्वेस्टिगेट करने वाली है, यूएस जो है प्रूफ डालने वाली है इंडिया एंड 15 अदर कंट्रीज के अगेंस्ट, राइट, for the trade policies. So United States of America,
and a US Trade Representative USTR launched an investigation on 16 countries, including India, to examine whether these countries have trade policies which are discriminatory, which restrict US commerce. तो इंडिया को भी उस पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एक सॉवरेनिटी वाला जो केस होता है ना, आई मीन थिंक अबाउट इट, व्हाई इन्वेस्टिगेशन नाउ? अमेरिका का जो पर्टिकुलर स्क्रू है वो ढीला होता जा रहा है, स्पेशली द ट्रम्प चाचा, है ना? आई मीन थिंक अबाउट इट, जब जरूरत थी प्रॉपर ट्रेड डील करने की, राइट, उस टाइम पे नहीं, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर ट्रम्प कैन लॉन्च द ब्रोक है, चल रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू चलेगा अभी जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता, जब तक ये डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ से नहीं हटता। So, another particular news from Supreme Court on OBC creamy layer, right? Supreme Court का जजमेंट आया है कि पर्सनल इनकम अलोन कैन नॉट डिटरमाइन द क्रीमी लेयर स्टेटस। सो ये एक आज के डिस्कशन का पार्ट रहेगा। फिर स्पीकर जो थे ओम बिरला, उनके अगेंस्ट जो मोशन लाया गया था वो हट चुका है, मतलब फेल हो चुका है, नंबर्स नहीं थे। हम पहले भी बात कर चुके थे कि द opposition doesn't have the number, it's a symbolic opposition, symbolic what we can say, um, protest against the speaker. And I saw the debates were furious, and जैसे ही ये वापस आए और राहुल गांधी, the leader of opposition, was speaking, right, he said about the Deep Singh Puri who called himself the friend of Jeffrey Epstein, right, वहीं से ओम बिरला जो है वापस अपने उसमें आ गए, नो 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 माननीय सदस्य नो, राइट। सो मजा है भाई साहब, मजा तो है। चाइना ने एक और नया एथनिक यूनिटी का लॉ बनाया हुआ है, सो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लॉ इज, एंड उसके अलावा मुझे और कुछ वो नहीं दिखता कि कोई खास न्यूज़ थी आज के उसमें। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट की। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट आई थिंक अबाउट द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट। डेली बेसिस पे वी आर हैविंग डिस्कशन ऑन सर्टेन पॉइंट्स, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू हैव 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमें डिबेट करनी चाहिए थी। सो और उसके अलावा जो चल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना? फर्स्ट थिंग, द reports that is on ground, जो local reporters हैं, उनके अकॉर्डिंगली ईरान इज अनडाउटली डोमिनेटिंग इन दिस वॉर। ईरान जो है वो डोमिनेट कर रहा है। यूएस जो है उसको ये एक गले की हड्डी की तरह हो गया, दिस इज सम प्लान, right? They had a simple plan that we are going to launch an attack. We are going to like kill the majority leadership. The public will come on the road. They will destroy the regime. They will establish a new regime. The new regime will be US friendly, but their particular calculation went wrong. And because of that wrong calculation, America is stuck into this war, and it is facing huge backlash from its own people, from its own allies. Yes, Spain, after Spain, it's Italy who said, you know, you did wrong. We are not into this particular war for with you. The UK, the France, they're not coming directly into the support, right? Germany is not coming directly into the support. So there are huge, different, like huge problem with the Americans. So kahin na kahin, Iranians are winning, right? It's another Vietnam where they keep committing the same mistake. No, they are not going to commit the same mistake. Like Vietnam, the information about Vietnam, like ये एक point है दक्ष, कि वियतनाम में द वे अमेरिका फेस्ड हैवी लॉसेस, उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचने में डिले हुई थी। सो दैट इज द रीजन कि वो 20 इयर्स लॉन्ग वॉर चल गया था, 55 to 75। बट फॉर मॉडर्न डेज, द वे वी आर हैविंग डिजिटल मीडिया, द वे वी आर हैविंग other particular media platform, fast internet, the information flows fast and people are getting that information fast, and they're not agreeing with the American administration। ये वियतनाम टर्न नहीं होने वाला, बट हाँ, काइंड ऑफ लॉस तो देखने को मिल ही रहा है। सो ईरान इज अनडाउटली डोमिनेटिंग इन दिस, एंड इट स्टिल क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी ऑयल, any tank which is not associated with the Iran, right? And apart from this, America कुछ भी कह ले, Donald Trump कुछ भी कह ले, यहाँ पे चीजें फंसी हैं। Talking about Israel, Israel is highly censored country. वहां से data नहीं आ रहा है, but whatever data, whatever videos we are getting after verification, Israel is seeing huge amount of destruction without a doubt.
राइट? अब उसमें कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या हुई है, दैट इज समथिंग जो बाद में ही पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। बट ईरान, इसराइल एंड अमेरिका, दे आर फेसिंग ह्यूज लॉस, whether that is economic, whether that is in terms of infrastructure and in terms of lives. Iran is also facing huge loss, but from last 2 3 days, the numbers in casualties in Iran like remains low. है ना, वहां पे जो नंबर्स हैं वो कम ही हैं. द इंक्रीज इन नंबर, द वे फर्स्ट 7 8 days we have seen the death of 1300 people in Iran. We're now getting that rate of casualty low. So ये एक अच्छी न्यूज है कि लोग कम मर रहे हैं, है ना, नॉट ओनली इन ईरान बट अदर कंट्रीज. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भैया ना हो. तो द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक चोक रहेगी तब तक अमेरिका की भी बैंड बजी रहेगी, बिकॉज the American businessmen, they don't want their business to be in loss, right? They have invested, they have like banks, they have different places. तो वो कंटिन्यू चल रहा है. एंड ईरान ने 37th वेव ऑफ अटैक वो किया है. दे आर गेटिंग अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन इजराइल विद द हिजबुल्लाह. सो अभी भी है चीजें. व्हाट आर द फोर मेजर पॉइंट्स जो कल के उसमें निकल के आए हैं, कल के डिबेट्स में से निकल के आए हैं. द फर्स्ट वन इज, मैं अल जजीरा कोट कर रहा हूँ. The Iranian Supreme Leader Mustafa Khamenei issued the first statement since replacing the assassinated father, the Ali Khamenei, calling for the bases hosting US forces in the region to close or attack will continue. तो his first particular demand, first statement में उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि जो यूएस bases है in the Gulf region, right, they should be shut down permanently or attack will be continued. फिर जो इजराइल की मिलिट्री है, दे हैव अनाउंस्ड start of a new extensive wave of strike on the Iran's capital Tehran as Israel issued a forced evacuation order and made new attacks on the Lebanon capital Beirut. तो इसराइल ने भी अपना पर्टिकुलर जो वो है अटैक है उसको इंटेंसिफाई करने की बात की है ऑफिशियली. ह्यूमन रिफ्यूजी एजेंसी सेज approximately 3.2 million, that is 32 lakh people, have been displaced in Iran due to US-Israel attack since the launch of the war on the February 28. So लगभग 32 लाख लोग ऑलरेडी ईरान से क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं. दैट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएन रिफ्यूजी एजेंसी. फिर Iran is not only attacking on Israel, but कल की जो news है उसमें the waves of Iranian drone and missile continue to target the Gulf countries beyond Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Saudi, UAE, right, and their American bases. तो ये कंटिन्यू चलता ही रहा है. एंड वो सारी चीजें जो हैं, ये चार मेजर पॉइंट थे कल के उसके. नाउ टॉकिंग अबाउट क्या ट्रम्प क्या कह रहा है, तो ट्रम्प ने एक व्हाइट हाउस इवेंट के दौरान कहा द वॉर इन ईरान दैट इज कमिंग अलोंग वेरी वेल, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो एपिक फ्यूरी का वो उसका जो स्टाइल होता है, लाइक ही इज अनाउंसिंग समथिंग जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू के एंट्रेंस थीम में है. सो वो कंटिन्यू था. बट अकॉर्डिंग टू अमेरिका, ट्रम्प के अकॉर्डिंग एटलीस्ट, द वॉर इज गोइंग वेरी वेल, राइट. तो यहाँ पे चीजें थी जो आपको जानना था. नाउ टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पॉलिटिकल एनालिसिस, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है. So, जो न्यू लीडरशिप है ईरान की, राइट, जिसमें जो मुस्तफा खमाइनी है, राइट, हिज फर्स्ट स्टेटमेंट seems like vowing down to the vengeance, right, and the vengeance may affect the Iranian policy. So कुछ लोग कहते हैं कि वो जो वेंजेंसफुल स्टेटमेंट है उसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए. बट एनीबडी लाइक लॉस्ट लाइक 40 फैमिली मेंबर्स इन अटैक, तो कहीं ना कहीं वो वेंजेंस की तरफ ही जाएगा. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो वेंजेंस वाले गेम में ना रहे. स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज स्टिल क्लोज्ड, है ना. कोई स्ट्रेटेजिक क्या कहना चाहिए सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं मिलके ये लोग. हाँ, इंडिया के लिए कुछ अच्छी न्यूज ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, एंड आज की न्यूज में ही पढ़ोगे पीएम मोदी टॉक टू द ईरानियन प्रेसिडेंट एज वेल. सो जो वो बैक एंड चैनल्स थे उसके बाद दे हैव द इंडिया एंड ईरान हैव ओपन द प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल टू टॉक. एंड दिस इज वन ऑफ द वेलकमिंग व्हाट वी कैन से स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गया है.
But let's hope for the best. Iran will never want like to lose an ally like India. India is one of the largest economy in terms of consumers. So वो चाहेगा कि इंडिया हम उनके साथ बना रहे तो they might get that particular thing जहाँ पे उनको इंडिया की जरूरत भी है तो इंडिया को वो रखना चाहेंगे साथ में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो हमारा फ्यूल और पेट्रोलियम प्राइसेस दिख रहा है वो जल्दी से क्या हो व्हाट वी कैन कंसीडर में रहे. नाउ एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो जो $100 पर बैरल का मार्क है वो क्रॉस हो चुका है. दो तीन बार हुआ बट अभी एक रेगुलरली हो रहा है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जो है उसको रिलीज करने की बात की और यूएस ने उसमें कंट्रीब्यूट करने को बोला है कितना कुछ 172 मिलियन बैरल. सो कुछ 40 करोड़ बैरल जो है क्रूड ऑयल 40 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल that is to be released out of which 17.2 crore barrels will be contributed by US, right? तो ये एक अच्छा पर्टिकुलर साइन नहीं है. दिस इज नॉट अ गुड साइन. This actually indicates that the war may go longer, and the longer this war goes, the longer is the global economic impact. We have discussed this yesterday how a small particular commodity can lead to a large disaster. Remember? हमने बात की थी कि अगर सल्फर नहीं आया तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आएगा. If there is no sulfuric acid, which is the most widely used chemical in the industries, then metallurgical operations are going to be compromised. And if there is no metallurgical operation, that means copper and other metal won't be there. If there is no copper, there is no AC, there is no EV, there is no chips, and there are no advanced technology. So it's not just about oil crisis, it's about a lot of different things. We have discussed this as well, how the ceramic industry, how the fertilizer industry, how the metallurgical industry, how the other cosmetic industries as well, right? They are all going to be affected. So it's a huge loss. Yesterday I saw a particular meter, Hannah, which said that in the 12 days of war, the US have US have lost approximately $12 billion directly into the war, but approximately $3 trillion indirectly. Right? That indirectly is the byproduct of this war, whether that is market crash, rise in fuel price, and other particular businesses which are industries which are facing losses. तो है प्रॉब्लम है ये एक साथ नहीं होगा ये कई उसमें चीजों में वो करेगा. So that was the update on the what we can say the West Asian conflict, right? India's crude oil supply is secure, no fuel shortage, ministry tells to Lok Sabha. So जो हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी ऑयल एंड गैस मिनिस्टर he said that this is something जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. And जो फ्यूल है जो एलपीजी है वी डोंट हैव एनी शॉर्टेज. ये पैनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने क्रिएट किया है. वी आर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारा डिबेट डिस्कशन हुआ बट अल्टीमेटली कुछ तो आया. द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वॉज टू कीप स्टेट ऑफ हॉर्मुज शट. वो अपन बात कर चुके हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज है ना. एससी टू स्टडी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल डेटा. ओके सो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं है ना. डीपीडीबी राइट. ओके सो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल. सो अगर मैं रिसेंट की न्यूज बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of several provisions of the Digital Personal Data Protection Act 2023. Right? This was after a petition filed by the transparency activists and media groups who argued that the law undermined the Right to Information Act. जो petitioner है उनका कहना है जो आरटीआई है उसको करप्ट किया जा रहा है. मतलब द इंफॉर्मेशन वी सपोज टू गेट फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसको लेसर एंड लेसर किया जा रहा है. एंड दे आर मेकिंग हार्ड टू गैदर द इंफॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं इसके लिए अगेंस्ट उन्होंने वो किया था. सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू एग्जामाइन दिस. टॉकिंग अबाउट द मेजर डेवलपमेंट तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि भाई एग्जामिनेशन जो है एग्जामाइन करेगा कौन. सुप्रीम कोर्ट. सो द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस सूर्यकांत इशूड अ नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, seeking a response to the petition challenging the act, and they are going to examine the constitutional bench referral. The court has referred matter to the constitutional bench, right, decided to the DPDP laws uses privacy as a tool to dismantle the public rights to know.
सो अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा चुकी है एंड दे विल अंडरस्टैंड दे विल ट्राई टू टेल अस कि वेदर दिस इज अ प्राइवेसी कंसर्न और नॉट। हम इसके बारे में बात करेंगे डीपीडीपी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई स्टे लगा है। सो इन दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर नाउ देयर इज नो इंटरिम स्टे ऑन द एक्ट। द एक्ट कंटिन्यूज, है ना। द कोर्ट हैव इशूड the notices, they want to study the legal issues, but they said they cannot grant any stay into the interim act, right? So वो चलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जो which can be a very good topic for the CLAT। ओके, सो द इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट माय वर्ड, दिस इज एंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीआईबी ने जो रिलीज किए थे, मैंने उससे अपने नोट्स बनाए हैं। सो वी कैन से द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल aims to safeguard the citizens' right for the protection of their personal data, right? This particular act came on 2023, right, in line with India's commitment to create the robust framework for the protecting the digital data. Now, इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल डेटा जो है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, बट हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट इसके बारे में बहुत सारी बात की। जो फीचर्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले रूल प्लेसेस सिटीजन राइट एट द हार्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। ये उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा है ना, मेरी लैंग्वेज नहीं है, आई एम नॉट पोएट, यहाँ पे पोएट नहीं बन रहा हूँ। The this particular act provide clear and accessible information about how a personal data is proceed, enabling the informed consent. Right, citizens are empowered with the right to demand the data insurance and appoint the digital nominee and access user-friendly mechanism to manage their data. The rule empowers citizens for by giving them the greater control over their data, provision for informed consent, right? And parents and guardian are empowered to ensure online safety for their children. They have like so ओवरऑल फैशन में यहाँ पे अलग अलग जनरेशन की बात की गई है। सो अगर कोई बुजुर्ग है जो अपना डिजिटल डेटा है, they can put a nominee over there, right? The parents can have their particular child protected from the online particular abuse and several other things. According to the expert from the government panel, this law is actually a balance between innovation and a regulation. The way technology is being getting innovative day by day, the इंडिया के एक जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि दिस इज अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड रेगुलेशन। इंडिया का जो मॉडल है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो है। आई मीन फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट्स लाए गए हैं रेलेवेंट टू प्राइवेसी, रेलेवेंट टू डेटा एक्सेसिबिलिटी, कहीं ना कहीं ये थोड़े से क्वेश्चनेबल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से संचार साथी, this particular application was developed to ensure that your cell phone is not being used for the wrongdoing, but the permission they asked was questionable. I mean, you just need the number, but you are asking for everything: camera, फोन नंबर्स, कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा। सो ये कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा डाउट आना शुरू हुआ है whether the government want us leave our data on their server so that whenever the time comes they might use it, they might understand what is my political orientation, they might curb the election, they might have like benefit from this. So there are huge number of discussion जो इस पे चल रहे हैं अलग अलग उसमें। सो यहाँ पे है ना। अब जो वो है क्या कहना चाहिए, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, which actually government says the rules embraces the digital by design philosophy, consent mechanism, grievance redressal, and the functioning of a data protection board all are invest in the bone digital to ensure ease of living, ease of doing business. Right, the board will function as the digital office with a digital platform and the app that is applicable to the sorry enable citizen to approach it digitally and to have their complaints educated without their physical presence that is being required. Imagine getting a house raided after you downloaded the Sanchar Sati. You were talking about the चलो तक वो छोड़ो।
Like you're talking about how the gas price is increasing, and for that you are being rated. So उन्होंने जो बोर्ड बनाया है, बोर्ड की जो फंक्शनिंग बनाई है, the functions they will have, whether that is the grievance redressal, consent mechanism, right, how the data will function. So lot of different things are there जो बोर्ड को उन्होंने डिजाइन करने पे दी है. स्टेक होल्डर कंसर्न जो है ये एक अच्छी चीज है. मैं तुम्हें बता देता हूँ. राइट. तो सबसे पहले गवर्नमेंट की उसमें बात कर देते हैं. द बिजनेसेस बेनिफिटेड फ्रॉम द डेटा, like from a pragmatic framework, graded responsibility cater to startup MSMEs with a lower compliance burden, while significant data fiduciary have higher obligations. Sector-specific data protection measure can be complement the core personal data protection framework created by the Act and the rules. The Digital Data Protection Board Digital Office ensures a quick and transparent resolution of the complaint, provision for annual data protection impact assessment, and audit for significant data are effective arrangement to secure it. और जो लास्ट वन है जो which is like most important thing is this particular bill also talk about the awareness initiative. यस. इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के बारे में या राइट टू प्राइवेसी के बारे में या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कितनी अवेयरनेस होगी. आई मीन वी स्टिल लिव इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे वी like recently recognized the menstrual hygiene as the fundamental right, and we are talking about the digital data protection bill. So think about it. The people don't have awareness about the periods, how important and how to handle that. And we are talking about the awareness relevant to personal data protection. So yes, awareness का जो particular aspect है कि we will increase the awareness about it. ये कहीं ना कहीं मुझे क्या लगा कि सबसे बेस्ट उसमें था. तो citizens engagement in the government plan, right? Through awareness campaign and initiative. This is something to educate people about the protection of digital data, how to use cell phone. ये सारी चीजें जो है ये बेस्ट हैं इसमें. ओवरऑल फैशन में द थिंग्स मे लुक गुड, बट हमेशा क्वेश्चन होते ही हैं द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. इफ somebody is collecting my data, why it is collecting. For example, let's say XYZ platform is a kind of shopping platform, e-commerce platform. So all they need is my address, all they need is my cell phone number so that they can call me or they can send me the text. But why they want to access my location, why they want to access my contact list, why they want to access about my birthday, why they want to access about other thing, right? Just like they also want to access my gallery. राइट. हाँ. सो दैट इज समथिंग जो कि मुझे नहीं लगा कि सही है. सो जस्ट दिस इज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो थोड़ा इंटेंशन की भी गेम है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट की अपने लिए सही हो. सो दैट इज व्हाट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल और उनके उसमें डिस्कशन. नाउ यूएस बिगिन प्रोबिंग द इंडियाज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी फॉर द ट्रेड. थोड़ा सा कहना एमएससीटी की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट कब है. एक बार वेबसाइट चेक करो यार फराज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. या कल पूछना तो मैं अपनी टीम से पूछ लूंगा, द एक्सपर्ट हु टेक केयर ऑफ एमएससीटी. सो इसकी भी बात कर लेते हैं भैया. ये अब नए नखरे लेके आया यूएसए ट्रेड प्रो. So, United States has recently escalated an action against what it terms the discriminatory and unreasonable trade practices by launching a major investigation under Section 301 of the Trade Act 1974. So again वो Trade Act जो है वो न्यूज़ में आ गया है ना. ट्रेड एक्ट के 1974 वाला जो एक्ट है उसके 301 सेक्शन के अकॉर्डिंग they have launched a probe with against those countries which they think the practice of trade is discriminatory and unreasonable. ठीक है. सो व्हाट इज द टाइमलाइन अगर मैं बात करूं तो 11th ऑफ मार्च को जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है यूएसटीआर, राइट, दे इनिशिएटेड द प्रोब इंक्लूडिंग लाइक 16 कंट्रीज. कंट्रीज के नाम है जिसमें इंडिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, मेक्सिको, वियतनाम एंड सम अदर कंट्रीज.
right? The core issue against this is like structural excess capacity and overprotection that the US claims harm the domestic industries, right? तो जो countries हैं उनके जो ओवर प्रोडक्शन है जो उनकी इंडस्ट्रीज सॉरी जो प्रोड्यूसर जो इंडियन मार्केट में बहुत अमेरिकन मार्केट में पहुंचते हैं दैट इज समथिंग जो थोड़ा सा अमेरिका को लॉस में लेके जाते हैं. The USTR is examining the industrial subsidiaries, state-supported manufacturing expansion, market access, barrier and currency practices. Right? जो मेजर सेक्टर है उसमें मेटल है दैट इज स्टील एल्यूमिनियम राइट ऑटोमोबाइल्स हैं सेमीकंडक्टर्स हैं बैटरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं केमिकल्स एंड सोलर मॉड्यूल है तो अमेरिकन्स वांट टू हैव अ प्रोब अगेंस्ट दीज कंट्री कि क्या उनकी प्रैक्टिसेस ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हिच इज विद अमेरिका राइट क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी और अनरीजनेबल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है जो एक्सपर्ट्स का कमेंट है वो ये है कि जो 20th ऑफ फेब आई गेस यस जो एससी की रूलिंग आई है अगेंस्ट दैट दोस ट्रेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स अगेंस्ट द अमेरिकन ट्रम्प राइट ये वो पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए रूलिंग है जिसके कारण ये प्रोब जो है वो स्टैब्लिश की गई है सो इट्स अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट कह सकते हो राइट. जो टेम्परेरी टैरिफ है ना इन रिस्पॉन्स टू द रूलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज अ टेम्परेरी टैरिफ ऑफ 15% फॉर द 150 डेज है ना. और जो वो है क्या कहना चाहिए these countries जो इन्होंने वो किए हुए हैं फॉर एग्जांपल इंडिया इज देयर फॉर एग्जांपल ईयू इज देयर राइट दे ऑल हैव ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका. तो अगर मैं वाइडेड बात करूं ईयू की they started facing threats probe following the antitrust fines against the US tech giants like Google, Apple, which US views as discriminatory. So यूरोपियन यूनियन के जो लॉज है ना जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सीधा कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन के लॉज हैं उनके कारण गूगल एप्पल एंड कई पर्टिकुलर बड़ी टेक जाइंट्स को यूरोपियन यूनियन की तरफ से फाइन लगाए गए हैं एंड उनकी तरफ से जबरदस्ती बेंड किया गया है. For example, talking about the universal charger, talking about the Apple's सॉफ्टवेयर अपडेट. हाँ मतलब उन्होंने इस चीज पे भी बात की कि अगर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट से आपका फोन स्लो होता है तो why you are providing software update to the older models. राइट तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग जगहों पे फाइन्स लगाए हो तो यूरोपियन यूनियन टारगेट बना उसके लिए. इंडिया इज फेसिंग अ थ्रेट बिकॉज ऑफ व्हाट वी कैन से सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी दैट इज नियरली 3 times इट्स डोमेस्टिक डिमांड एंड 58 बिलियन ट्रेड सरप्लस. चाइना के साथ तो अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है ही चाइना के उसमें साइड में. तो दीज कंट्रीज आर बीइंग टारगेटेड बिकॉज ऑफ 2-3 रीजन. फर्स्ट हो सकता है एक पर्सनल वेंडेटा हो. मैंने बोला ना ईयू में जो टेक जाइंट्स है उनको फाइन्स लगाए गए. इंडिया इज हैविंग ट्रेड सरप्लस चाइना इज हैविंग ट्रेड सरप्लस एंड दे बोथ आर समहाउ कॉम्पिटिटर्स. तो अदर कंट्रीज के साथ भी यही चीज है. 17th of March द पब्लिक के लिए जो है रिटर्न सबमिशन के लिए ओपन किया जाएगा एंड अप्रैल 15 तक जो सबमिशन और हियरिंग जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी. और 5 to 8 मई में पब्लिक हियरिंग एट द यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन इन वॉशिंगटन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा विच कंट्री इज हैविंग डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनरीजनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. राइट सो अमेरिका अब ये भी कर रहा है. खैर दैट वाज द न्यूज फ्रॉम दिस. Moving on to the other news, a restaurant in railway station hit by the LPG crisis. But the minister is still saying that there is no particular crisis. But the government establishment has started seeing it. And you cannot even imagine how important and this particular news, national news is. Right? There's this girl who went viral in the Kumbh Mela, Prayag. Right? The girl name was Mona Lisa. She got married with her boyfriend or fiance, and this become a national news because the boy he married was from the Muslim community. So first they talked about the love, then they talk about the love jihad. Now they are talking about other things. So वो continue चले जा रहा है. खैर छोड़ो. Good news uh, for us that Karnataka government forms a panel right to develop the framework for AI adoption. So they are going to have a proper research the panel
is going to understand how well we can adopt AI and how well we can make people aware about. Right. राज्यसभा में जो MPs हैं, they raises UP school closure and judicial diversity. So UP में you understand that from last few years, approximately 30,000 schools were what we can say shut down, and this is something जो कि एक problem है. I mean, closing 30,000 school, that means we are closing huge number of uh, opportunities to make student study and literate. तो उसके बारे में बात हुई है. Every MP can speak, but only as per rules, says Speaker Om Birla. After the motion was failed, Speaker Om Birla came back to the House, right? And so he said कि every MP can speak, but only after the like only as per rule. Okay, so ये continue. खैर छोड़ो. India co-sponsor the resolution passed by UNSC against Iran. ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल वो लगा. I mean, I'll tell you what exactly is the problem. At one side, the Indians, like whether that is Ministry of External Affairs, Modi ji jo hai, they are talking to the counterparts of Iran to settle down the relations, to maintain that particular relation जो हमारा पुराने time से था. And on the other hand, they are co-sponsoring the resolution against the Iran in the United Nations Security Council. हाँ, ये मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगी. मुझे ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आई कि व्हाई इंडिया इज डूइंग दिस, राइट? बिकॉज undoubtedly the India is getting affected, right? Why it is getting affected? Because जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहेगी तब तक हमारे पास जो है वो व्हाट वी कैन से एनर्जी क्राइसिस के डर बने ही रहेंगे. दैट इज करेक्ट फॉर श्योर. बट व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर वाज स्टार्टेड बाय यूएस एंड इजराइल, and they started the war even at that particular time when the peace talk between the Iran and US was going on. तो कहीं ना कहीं ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस थी, एंड जो है वो एक गलत तरीके से आई है ना? तो मुझे नहीं लगता कि इस पे अगेंस्ट में जाना सही था. So the resolution demand immediate cessation of all attack by the Islamic Republic of Iran on the GCC, that is Gulf Country Council. India prioritize the safety of all civilians, says Mistry, in a wake of criticism under the unbalanced response to the conflict in the Western Asia. So what was the response balanced from India? The answer was unbalanced, right? And ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ लगता है. So क्या कह रहे हो दक्ष? Like how everyone is saying, India didn't take stance earlier, but I think the silence was clearly stance toward the Zionists and USA. That is what I'm saying now. I mean, the Iran supreme leader was the highest authority in that particular country. Iran is a historic ally and helped us at different places. And उनकी श्रद्धांजलि देने में इतना टाइम लगना ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज जाती है. इंडिया का हमेशा से स्टैंड नॉन अलाइन रहा है. इंडिया स्टैंड वाज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पीस. इंडिया का फेवरिंग इंक्लिनेशन इज पीस. तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो वहां पे दिखनी चाहिए थी. इंडिया माइट हैव प्लेड अ रोल फॉर पीस, क्योंकि इसराइल के साथ, यूएस के साथ, ईरान के साथ, तीनों के साथ अच्छी बनती. बट खैर, रिपोर्ट्स ऑफ ईरान अलाउइंग इंडियन शिप्स थ्रू द स्ट्रेट आर प्रीमेच्योर, सेज गवर्नमेंट. Yes, media houses suddenly they like media वालों को जानते हैं तो वो सर्कस बना देते हैं. So they started saying कि according to the sources, right, Indian ships are being permitted to pass from the strait. If a ship is having Indian flag, they will allow. Ministry of External Affairs ने ऐसी particular चीजों को deny कर दिया, right? Prime Minister Modi speaks to Iranian president, discuss the situation in the West Asia. Too soon. अभी कम से कम 2-4 महीने और रुकना था मोदी जी. खैर, ठीक है. The parental income alone cannot set creamy layer status. ये एक जजमेंट आया रिसेंटली अबाउट द रिजर्वेशन एंड क्रीमी लेयर स्टेटस, राइट? जो कह रहा है कि जो एक पेरेंटल इनकम होती है, दिस कैन नॉट बी द ओनली मेजर. रुक जाओ, मैं बताता हूँ क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला था, है ना? यस, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से द पेरेंटल इनकम अलोन कैन नॉट डिटरमाइन द क्रीमी लेयर स्टेटस. दिस जो पेरेंटल इनकम है
वो अकेले एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं बन सकती किसी भी इंडिविजुअल को फ्रॉम क्रीमी लेयर टू नॉन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर टू क्रीमी लेयर पुट करने में, राइट? This particular judgment ruling actually will allow children of public sector official and certain professional for qualify the OBC reservation, right? If other criterias are met. So अगर दूसरे criterias match हो रहे हैं caste and other things में and your parents like are in some particular government post or something, this may help them to get the creamy layer status. So कल पूरे दिन जो है आर्टिकल 14 to 16 के बारे में like right to equality के बारे में बात चलती रही and लोगों ने डिस्कस भी किया कि इफ लाइक इफ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, है ना? वो इसलिए था क्योंकि हमारे जो पुरखे थे, द एंसेस्टर्स from the lower caste, they were never given financial social opportunity to grow, political opportunity to grow. So when the parents are capable, then whether they should be given reservation or not. तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर डिबेट कंटिन्यू थी, ठीक है? इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। Justice for all, the directives to NCRT shows the court as keen to stave off any criticism. जुडिशरी ने जो पर्टिकुलर, फराज अभी क्लास में फोकस करो, न्यूज में फिर अपन बात करते हैं, ठीक है? सो द डायरेक्शन जो एनसीईआरटी के साथ कोर्ट ने किया कि उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ये हटाना पड़ेगा एंड दिस इज बैड, दैट क्लास 8 सोशल साइंस बुक with talk about the corruption in judiciary. So that is something जो कि welcoming नहीं है. Is India's dealing the US in its West Asian policy? Right? ये जरूर पढ़ना. This will actually tell you how and what is the stance, right? जो इंडिया ने लिया and how it's actually US inclination. Talking about the trade news is अपन बात कर चुके हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज के लिए प्रोब जो है अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है, right? And apart from this, energy power play and Indian oil gas strategy and amid US-Iran tension, सबने जो बात की है उसका ध्यान रखना. Why don't they initiate reservation based on income? Now everything is digitalized and it's easy to keep check. Daksh, actually reservation is not a kind of a fundamental right. It's a legal right. पहली चीज तो ये है डिफरेंस समझने के लिए. Second thing, I believe neither the reserve category nor the unreserved category understand what was the motive behind that reservation. Because of one reason, क्योंकि ना तो लाइक क्या कहना चाहिए, वो क्या रिजर्व कैटेगरी ने कभी पढ़ा है, राइट? अबाउट दी दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, राइट? उनकी फिलॉसफी क्या थी, व्हाट ही वांटेड थ्रू रिजर्वेशन, राइट? और ना ही अनरिजर्व कैटेगरी ने पढ़ा है. सो बोथ ऑफ देम आर सपोज्ड टू हैव दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ नॉलेज फर्स्ट कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस. अगर वो फिलॉसफी समझते हैं तो बड़े आराम से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है. The problem of reservation is because of politicians who have created the hate, right, between the reserve and unreserved category, so that they can get the votes, right? Yeah, unreserved category people will say कि this is wrong, हम उसको हटा देंगे. The reserved category party will say कि this is right और हम उसको बना के रखेंगे. And they never discuss about the consequences. तो ये है एक प्रॉब्लम. While तुम्हारा जो पॉइंट था कि बेस्ड ऑन इनकम ये रिजर्वेशन होना चाहिए, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. अगर तुम्हें पता हो तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है एंड एक रिपोर्ट थी, थोड़ा पुराना न्यूज़ है. There were movements during 2010 to 2016 जिसमें अदर कम्युनिटीज जो है वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही थी, whether that is पाटीदार कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी. उस टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी which actually described that the रिजर्वेशन का जो पर्टिकुलर पॉजिटिव साइड होना था, जो उसका इफेक्ट होना था लास्ट 75 ईयर्स में, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा. आई मीन देयर आर पीपल हु नीड्स रिजर्वेशन बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉलिसीज. तो उसको कहीं ना कहीं एक एक्सटेंसिव स्टडी करके वापस उसको
रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से चलाने की जरूरत है। तो वो एक पर्टिकुलर चीज थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कब हमारी सरकार इस चीज को एग्री करती है। खैर, ट्रम्प एंड ईरान एक्सचेंज थ्रेट एज वॉर एस्केलेट्स। यस मित्रों, कंटिन्यू, पहले तू मार चल रहा है ना। और काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। स्ट्राइक्स किल एटलीस्ट 9 ईरान बैक्ड फाइटर्स नियर द इराक सीरिया बॉर्डर, ऐसा कहना है। यूएस इंटेलिजेंस indicates that Iran government is not at a risk of collapse anytime soon. So जो ईरानियन regime है, जो डिसीजन मेकिंग है, राइट, वो जो है एनी टाइम सून कोलैप्स नहीं होने वाली, ऐसा यूएस इंटेलिजेंस का कहना है। काफी चीजें थी दक्ष, मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगा है द लीडरशिप शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द यूनिटी, but the politics always create hatred between the communities, so that the people should stay bound to their stay loyal to their political leader. China passes a new law in ethnic unity, है ना। China passed a law on shared national identity among countries' 55 ethnic minorities group on Thursday, a move critics say will further erode the identity of the people who are not majority Han Chinese and risk making anyone challenge the unity a separatist published by the law. So, kul mila ke, if there are minorities and they are having certain particular identities, culture, this ethnic unity law will end their identity and culture very soon. So Chinese government are like welcoming this, but the outsider human rights activists they are not somehow agreeing with this particular concept. The Iran war exchanged India's migrant worker in the Gulf on uncertain future. ये बात भी सही है भाई, right? So I think this is it for the news. Ready for question answer, guys? Okay, so let's start with what we are having today. First, who recently became the new supreme leader of Iran after the assassination of Ayatollah Ali Khamenei? इनमें से कौन ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने आफ्टर द assassination of Ayatollah Ali Khamenei? मसूद पेशेश्किन, हसन रूहानी, मोस्तफा खमाइनी, इब्राहिम रईसी। बताओ। Eh? We are talking about supreme leader, not president. The correct answer is Mustafa Khamaini, na? Daksh. Very good, Rishparna. Chale, moving on to the next one. Which strategic maritime choke point did Iran threaten to keep closed during the ongoing West Asian conflict? Very good. So कौन सा जो मैरीटाइम चोक पॉइंट है ईरान ने बंद रखने को बोला है जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट चालू रहेगा? ऑप्शंस आर बाबिल मंडेब स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, या बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये तो बहुत ही इजी है यार। दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। Talking about the next one, approximately what percentage of the world's oil passes through the Strait of Hormuz? Right? लगभग कितना ऑयल जो है दुनिया का पास होता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? Right? The options are 10 to 15, 20 to 34, 40 to 40, 50, 60 to 70%. बताओ।
वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी, 20 to 34%। राइट, लगभग 20 to 34% ऑयल जो है वो पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। यस दक्ष, वेरी करेक्ट। Moving on to the next one, India recently co-sponsored a resolution on at the United Nations condemning whose action related to navigation interference. So India ने किस particular country against the United Nations Security Council के में condemning वो है resolution उसको co-sponsor किया है for the navigation interference. Options are China, Russia, Iran, Turkey. The correct answer is Iran. The correct answer is Iran. Right? Everybody, yes, very good. Which Indian minister stated that India's crude oil supply remains secure despite of the West Asian crisis? किस इंडियन मिनिस्टर ने ये बात कही कि इंडिया की जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो सिक्योर है भले ही वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? ऑप्शंस are पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण. Yes, हरदीप सिंह पुरी, right? Petroleum, natural gas minister. Very good, guys. Very good. Moving on to the next one. Which Indian law is currently being examined by the Supreme Court regarding the definition of personal data? Right? इसमें से कौन सा लॉ सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन करेगा which is regarding the personal data? Options are Information Technology Act 2000, Digital India Act, Digital Personal Data Protection Act 2023 या Data Regulation Act. Very good. The correct answer is DPDP. भाई पर्सनल डेटा से रिलेटेड तो यही पर्टिकुलर एक्ट है। हाँ या ना? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which organization in India recently flagged over 50 deepfake and misinformation cases that many link to Pakistani propaganda accounts? राइट, इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने 50 से ज्यादा डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन केसेस जो हैं जो पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा अकाउंट से लिंक्ड है उनको क्या किए हैं, बस्ट किए हैं? ऑप्शंस आर सीबीआई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फैक्ट चेक यूनिट, एनआईए या इलेक्शन कमीशन. यस, वेरी करेक्ट, दैट इज पीआईबी. हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो फैक्ट चेक यूनिट है उन्होंने ये काम किया. ठीक है, चले नेक्स्ट. Which separatist leader from Jammu and Kashmir was granted bail by Supreme Court in a terror funding case? इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का सेपरेटिस्ट लीडर है जिसे टेरर फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है? यासिन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम या सैयद अली शाह गिलानी? द करेक्ट आंसर इज शब्बीर अहमद शाह. यस, ये आदमी कश्मीर को अलग देश बनाना चाहता है. खैर, ठीक है. Next question. Which Indian state formed a committee on responsible artificial intelligence to guide ethical AI adoption? इसमें से किस स्टेट ने एक कमिटी बनाई है फॉर द रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू गाइड एथिकल एआई adoption? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना. बताओ.
Daksh, there is no update on Sonam Wangchuk. Right, he is still in the jail. The correct answer is B, Karnataka. अरे अभी तो बात की थी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एआई के प्रॉपर यूज के लिए एंड एथिकल गाइडेंस के लिए क्या किया हुआ है, एक कमेटी बनाई है. यस. वेरी गुड. नो नो, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा हुज रिमूवल मोशन वाज रिसेंटली डिफीटेड. अभी कौन है हमारे लोकसभा के स्पीकर जिनका रिमूवल नोटिस जो मोशन है वो रिसेंटली डिफीट किया गया है. ऑप्शन है जयदीप धनखड़, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, राजनाथ सिंह. बताओ. Very correct, Om Birla. Genius, guys. Proud of you. Which archaeological site in Bihar, Madhubani district recently received approval for excavation by the ASI? Right. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के को किस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट की एक्सकवेशन की परमिशन मिली है इन द बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शंस आर नालंदा रून्स, विक्रमशिला, बलिराजगढ़ फोर्ट या केसरिया स्तूप. बताओ. The correct answer is C, Balirajgarh Fort. The correct answer is C, Balirajgarh Fort. ध्यान रखना ये बात. ठीक है. So this was it for today. I'm really sorry for low energy. I'm not well. तबीयत काफी खराब है. बट स्टिल आई थिंक तुम लोग के साथ सुबह सुबह बातें करने में काफी मजा आता है. So that is the reason I'm taking this session, and it will take 1 or 2 days to like again come back to the full energy. Right. Till then, make sure to like the video, make sure to subscribe channel, and make sure, most importantly, make sure to study well. Right. Don't do anything that is getting you away from studies. Right. So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Maze karo. Good day, guys. See ya. दक्ष मैं चेक कर लेता हूँ, है ना.